Good evening, Mr. Arpit. Um, Please Good tell evening, me sir. which bank do you have an account? Sir, in State Bank of India. See, you were working last in LIC in which branch? Sir, Ramtek branch, Nagpur district, Maharashtra. That branch was having account with which banks? Sir, Bank of Maharashtra. Acha, good. So, which type Yes, of account you were having? Only current account? Any idea? yes, sir. No, I think they must have only current account. Yes, Very. sir. Mhm. Was the bank used for collection of checks and all? आजकल checks ज्यादा आता है और लोग accounts through इंटरनेट से क्रेडिट कर देते हैं. सर, 2 lakhs के ऊपर तो कैश नहीं लेते हैं, तो जिनका बड़ा प्रीमियम है उसके लिए तो कैश ही आता, चेक ही आता है। और अगर जिनका छोटा अमाउंट है और अगर उनको चेक से पे करना है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, कैश वाले ज्यादा है सर। वेरी आप गुड. ऑनलाइन जो सर्विसेज है वहां से कस्टमर पे कर सकता है, फोन पे, गूगल पे, LIC पे भी है, तो वो भी ऑप्शंस है। अच्छा. बट उसमें एक कंस्ट्रेंट है सर, कि अगर आपका ECS है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, और अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है तो फिर आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। सेकंड टाइम से ऑटो डेबिट नहीं होती है सर उसमें फैसिलिटी, ओहो. जब तक वेरी गुड. आपका पुराना प्रीमियम ड्यू है तब तक। Correct. Can you explain what is financial inclusion? सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन RBI का इनिशिएटिव है, जिसमें जो अनबैंक्ड रूरल एरियाज है या अनबैंक्ड जो पीपल है जो बैंकिंग फॉर्मल चैनल से जुड़े हुए नहीं है, उसमें उनको जोड़ना है। उनको अकाउंट्स भी ओपन करानी है, लोन्स भी देने हैं, पेंशन्स भी और इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये सब चीजें उनको देनी है उनके एम्बियंट और एरिया में, ताकि उनको फॉर्मल बैंकिंग चैनल से जोड़ा जा सके। मनी लेंडर्स या इनके चक्कर में जाके ज्यादा इंटरेस्ट पे ना करें, उनको सभी सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन, इंश्योरेंस भी दिया जा सके, और कम रेट में लोन्स भी मिले उन्हें, और उनका फॉर्मल बैंकिंग बैंक अकाउंट भी हो। ये मोटो है सर फाइनेंशियल इंक्लूजन का। Do you know? फाइनेंशियली Do you know एजुकेट about भी करना है this? सर उसमें। Do you know about the schemes adopted by banks and government for this purpose? What are the schemes? यस सर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम इज प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन विच अप्रोक्स No, no. 50 करोड़ अकाउंट्स। Don't tell me the details. Tell the accounts. या ओके, हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एंड फॉर पेंशन प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, एंड फॉर स्मॉल लोन्स इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। What is Sukanya Samriddhi Yojana? सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल चाइल्ड है सर, तो Hmm. 0 ईयर से 12 ईयर्स तक की जो गर्ल चाइल्ड है उनका अकाउंट ओपन किया जा सकता है, Uh, no, 1,50,000 पर no, ईयर no. तक उस, कितना एज बोला आपने? एज फ्रॉम बर्थ टू 12 ईयर्स। 10 years. 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, सॉरी सॉरी, 10 ईयर्स। 10 years. या बताइए. हाँ, उसका उसमें उनका अकाउंट ओपन किया जाएगा। उसमें फादर जो है उनका अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, उस अमाउंट को आप विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक जो बेटी है वो 18 ईयर्स की नहीं हो जाती। 18 ईयर्स की होगी तो 50% आप विड्रॉल कर सकते हो, और 21 ईयर्स के बाद उसको 100% विड्रॉल करना ही पड़ेगा। और उसमें गवर्नमेंट जो है अच्छी इंटरेस्ट रेट देती है। What सीनियर is the सिटीजन interest? सेविंग स्कीम के बाद सेकंड इसी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। What is the interest rate? सर सेवन, सर आई एम सॉरी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी, पर 7.5 टू 7.89 के बीच में है सर शायद। नहीं बाबा, 8%. 8% हो गया, हाँ सर, एवरी क्वार्टरली रिवाइज करते हैं ना इसीलिए। बट ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं रिवाइज किया.
अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ सर। सर मेन मोटो उसमें ये है कि अगर पेरेंट्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो Eight, गर्ल eight. चाइल्ड का It को is फॉर्म 8% only. 8%। ओके ओके। और सर इसमें मोटो ये भी है गवर्नमेंट का कि जो गर्ल्स है उनकी शादी 18 ईयर्स के पहले ना हो, 18 से 21 तक ना हो, क्योंकि 21 ईयर्स के पहले उनकी शादी नहीं भी करनी चाहिए, करनी पड़ती है इस अकाउंट में। और उनको फॉर्मल एजुकेशन भी मिले, ये भी उसका एक मेन मोटो है। Good. जस्ट Why लाइक you बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप। why you want to join banking sector? सर आई हैव वॉच वन मूवी, Hmm, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, hmm, द मैन हु बिल्ड अमेरिका, hmm, in which there are four people. The most important person is JP Morgan. hmm, He is a banker and he hmm, is the richest person. hmm, So after the reforms taken by to become a country a superpower, you need a very strong banking organization like America have. Now China is also very becoming second superpower. He is a big banks. hmm. So when a country progress, banking industry play a very big role for the development of any nation. So as per IMF and World Bank assumptions and calculation, India will become a fastest growing economy, and we will surpass China till 2047 and America also till 2075. So Hmm. in this growth period of India, banking industry will play a huge role, and I see a very huge growth opportunities in this sector. So I want to join this organization in the banking industry. Who is the father of regional rural banks? Hello. Father, yes sir, yes MS sir. MS So I'm Swaminathan. Narasimhan sir, MS MS Swaminathan. Swaminathan sir, हाँ sir, हाँ, father of green revolution as well. Yeah. Explain MS NPA. Swaminathan, yes. Explain NPA and also agriculture NPA. Sir, NPA is a non-performing asset. Whenever a customer take a loan and he will not able to pay a premium or interest till 90 days, the account will be converted into non-performing asset for all loans, but except agriculture loan. In Hmm, agriculture loan, NPA is not decided on the basis of number of days. Instead, NPA is decided on the crop season. If it is short-term crop, for if two short-term crop seasons, if person don't pay a loan, it converted into NPA. And for long-term crop, it's for one season only. What is stand-in committee? Which committee, sir? Stand-in committee. Stand and No, no. Stand-in. TANDON. Tandon committee. Hmm. Uh, Sorry, sir, I'm not recognizing. This is the committee that has recommended about processing of credit proposals for working capital. Okay, okay, sir. It's in which year, sir? Long back, about 20, 30 years ago. But why did you Okay, not okay, okay. prepare on these points also? Hmm? Okay. Tandon committee. I told you that day, na, that is working capital facility is a must. So these are the questions they have asked in one candidate. First is Tandon committee. Next question. What is the cost of deposit calculation? How will you calculate the cost of deposit? It's a very tough question, but Uh, yeah. Cost of deposit in the sense, sir, the amount which bank is paying to the customer on its deposits. Mm, Maybe it's a cost of I am deposit. I am again searching in Google. It says banks calculate average cost of deposits by dividing total interest paid on different types of deposits, such as current account, Yes. savings account, term deposits, by Uh, total amount of deposits mobilized on a particular day of a month or a year, as the case may be.
That is, what is the Yes. total interest paid by you during this year divided by as on this date, what is the total deposit, including current account, savings account and term. Account term deposit. Yes sir. समझ गया? समझ गया? Yes sir. Yes. हाँ सर हाँ सर. Your branch is having more of deposits than advances. Then how it is making profit making? How it is a profit making branch? Your branch is having more of deposits than advances. Then even then it is called a profit making branch. How? Perhaps you may not know this. This is in the case of Uh, inter branch. See, when the funds, whatever deposits are collected, are remitted by the bank to the head office. yes Similarly, sir. Yes. whenever we need money, we debit the head office account and draw the monies. In the case of a bank branch which has got more of deposits than advances, for them, they would have remitted more money to the head office. So in turn, Yes. there is a formula or calculation by which head office will be paying certain amount of on the basis of the monies remitted by them. Once we take that money as income, the bank will be making profit. Inter-branch Yes. transactions. This you may not be able to speak because unless you have worked in a branch, you will not be able to tell this. Do you follow the Yes sir. Yes. dynamics I have told? Correct. Yes sir. Yes Okay. sir. I Okay. was thinking if bank have some extra money, he park with Reserve Bank of India to No, no, earn no, some no, interest no, in no, a. no, no. Not that way. No na. Not that way. Not that way. See, Okay. you are a Nagpur Yes. branch, RRB. You will be remitting money to your head office. Your head office will Yes be sir. Yes using sir. the funds. So whenever you Yes are sir. Yes. remitting money to head office, you will credit its Get account. some Whenever interest. you want, you will debit that. The difference may there is some formula by which branches are paid. That is known as transfer price mechanism. Please search in Transfer Google. price mechanism. Yes sir. Please search in Google banks transfer price mechanism. Bank transfer price mechanism. Yes sir. What is operating cycle? Operating cycle. Sir, operating cycle is in the same way when customer is depositing money in our banks and we are lending that money, taking some spread in between to some lenders. In this way, money is rotating, sir, between customer to bank, then bank to again customer, and we are getting a money multiplier effect. Sorry, wrong. Operating cycle कैसे होगा? In the case of companies manufacturing goods, उन्होंने क्या करेगा? They will हाँ be purchasing raw materials. उस raw materials को work in process बनाएगा, then finished goods बनाएगा. तब that that and वो finished goods को दूसरे लोग का बिक्री करेगा, वो लोग बेच इनको cash हाँ payment करेगा. So that is the completion of operating cycle. See, it was initially cash. ओके You start buying a raw material. That raw material is made into a finished goods using labor, other charges. That finished goods is sold to the buyer. Buyer pays you money. A pura this cycle is known as what? Operating cycle. समझ operating गया? cycle. Yes sir. Yes sir. This is a very tough question they have asked. I don't know how we are going. What is assets stripping? This even I don't know. I am just referring to this only through Google, and this is what it is. Asset Not stripping. Not Karli ji. Asset stripping
is a term used to refer to the practice of selling off a company's assets in order to improve returns for equity investors. In many cases, where the term is used, a financial investor, referred to as a corporate trader, takes control of another company and then auctions off the acquired company assets. So इसको पढ़ लीजिए आप. हाँ सर, यस सर. I might not be able to explain fully. आप पढ़ लीजिए इसको. जी I'm सर, जी giving सर. I'm giving in our Telegram page. Okay. Then यस सर. another question they have asked: can you tell about return of assets? This also I don't यस know. सर. I also do. I have no practice of this. India banks or return of सर assets. वो कैसे accounting मुझे करना पता है पड़ता? सर. अब बताइए बताइए. सर रिटर्न ऑफ में क्या होता है कि जैसे अगर आपने लोन पहले एनपीए हो जाता है 90 डेज में. अगर वो 90 डेज हो जाने के बाद अगर 1 ईयर तक एनपीए ही रहा, तो सर वो सब स्टैंडर्ड में चला जाता है. और फिर अगर सब स्टैंडर्ड में जाने के बाद में भी अगर 1 ईयर और हो गया, तो सर वो सब स्टैंडर्ड के बाद फिर डाउटफुल में आ जाता है सर. नहीं, पहले डाउटफुल होता है फिर सब स्टैंडर्ड हो जाता है. और अगर No, no, बैंक no, को no, पता है wrong, कि उसकी जो wrong. टोटल Hello, hello. First is substandard, then doubtful. पहले सब स्टैंडर्ड फिर डाउटफुल ना. हाँ, फिर No, no. डाउटफुल हो जाता Yeah, है और उसके yeah. डाउटफुल हो. हाँ, First, डाउटफुल हो first, जाने के बाद first, अगर first is standard, substandard, doubtful, loss assets. हाँ, से लॉस Is एसेट में अगर नहीं, लॉस एसेट तब होगा जब उसकी सिक्योरिटीज की वैल्यू ही जीरो हो गई. अब वो रिकवर नहीं हो सकता तो सर लॉस हो जाएगा. और correct. रिटर्न ऑफ में मतलब कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं पड़ी, पर रिटर्न ऑफ जो है लॉस के पहले की सिचुएशन है सर. तो Hmm, अगर वो रिकवरी नहीं हो रही है उसकी अभी और कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, तो हम उसको सिर्फ हमारी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर देते हैं. correct. राइट ऑफ I, करने से ये होगा कि हम हमारे सिर्फ बैलेंस शीट से हटाया है ताकि हमारे ग्रॉस एनपीए कम हो जाए. hmm, और पर उसकी रिकवरी प्रोसेस चलती रहेगी, बस वो बैलेंस शीट से हट जाएगा ताकि हमको हमें टैक्सेस भी कम लगे. इसलिए सिर्फ उसको बैलेंस शीट से हटा देते सर. exactly. Same thing they have given here. When a business does not expect to recover a debt, the debt becomes bad and is written off to assume a more attractive position and reduce its tax liability. Banks often write off हाँ. toxic loans, the most common of bad debt for a bank. Anyhow, thank you हाँ. so much. यस All सर. these questions are available here in the material I have given you. Please go through like this remaining questions also. इसको अच्छा prepare कर दीजिए. Go for interview हाँ सर. हाँ. and score well and send me the questions they are asking you. Best wishes today. Your performance is better than yesterday. Only practice. यस. Practice makes you यस confident. सर. यस. But अभी देखो, जो क्वेश्चन को हमको भी डाउट था आपने आंसर कर पाते थे. हाँ सर. That way I appreciate you. Best of luck. Thank you.